Ladies and gentlemen, good day and welcome to the conference call of Kabra Jewels Limited, hosted by 28th Consulting. From the company side, we have Mr. Kailash Kabra, Managing Director, and Mr. Surendra Shah, Company Auditor. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Kailash Kabra for an opening remark. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today for this conference. I would like to give a brief update on the company's operations. FY25 marked a significant leap for the company with broad-based growth in revenue, profits, and EPS. The strategic development of IPO funds, operational expansion, including new showrooms, and a diversified product portfolio has created a strong foundation for sustained growth. With continued focus on customer experience, efficient inventory management, and brand enhancement, the company is well poised for further expansion and improved shareholder value in the coming years. Despite a notable increase in gold price, the net profit margin saw a marginal decline as the increase in gold price cost is often not entirely proportionate to the increase in selling prices. Additionally, while overall revenue rise with gold prices, the labor charge also rise. As a result, the percentage of profit in relation to sales volume naturally adjusts, impacting margins. However, the overall scale and turnover of the business continue to grow robustly. All retail locations are currently operated on a lease model. This approach allows the company to remain asset-light, flexible, and strategically positioned to expand in high-potential markets without capital burn of real estate ownership. Looking ahead, the company is well positioned for continued growth. The opening of a new showroom in May 25, which is called KK Jewels Gold and Silver, is a key milestone in expanding its market presence. The efficient deployment of IPO funds, increased inventory velocity, and operational enhancements are set to drive higher turnover and improved profitability. Backed by a strong track record over the past 5 years and a proactive growth strategy, the company remains confident in its trajectory and its ability to deliver sustained value to its stakeholders. I now request the moderator to open the floor for Q&A. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We'll take a first question from the line of Arpit Gupta from Gupta Associates. Please go ahead. Sir, going forward, is there any intention of the company to reduce debt burden by internal accruals or via external funding? Already, since debt is very high of 95 crore, which is affecting the profitability. So, if you can guide. Yeah, we are answering each questions. Right now, we are noting the questions. You just, moderator, can you get me more questions so we reply in one go? Actually, this is my first question, and the second question is that why has the company increased the short-term borrowings and the long-term borrowings have been decreased? So, is it any strategic business move? Or what is the reason really? So this is my second question. Yeah, see, as of now, company is in a expansion mode. Like after this IPO, company has already opened one showroom. So each showroom we need to maintain a good amount of quantity also, quantity of gold, silver, diamonds, and jewelry. So as of now, company is not in a is not planning to reduce any external debt as of now.
But obviously, in a near future, means we cannot assure you within how much time, but within 2 or 3 years, the company may plan to reduce the debt once the maximum Okay. number of stores are opened, and thereafter, the company may plan to reduce the debt from the accruals. This is question number one. Now, Okay. now your question relating to reduction of long-term debt and short-term debt. In reduction of short-term debt, just a minute. We are just replying you. શોર્ટ-ટર્મ વધી ગઈ છે ને? વર્કિંગ કેપિટલ માટે long-term debt જોજો. See, long-term debt has reduced. Yes, short term has been increased and long term has been decreased. So, is it any? Your question was something different. So, long-term debt has reduced because the regular installments which we are paying for vehicle loans and other things, we are regularly paying off. And that one loan from NBFC which we had acquired earlier, that has been fully paid off of around 9 crore rupees. So, long-term debt has reduced mainly because of repayment of vehicle loan installments as well as repayment of this, you can say NBFC and intercorporate loan. Okay. Now, short-term loan has increased mainly because of 2-3 things. Like, if you see working capital requirement has increased due to increasing turnover. And at the end of the year, whatever you are looking at the balances, उसमें एक 11.50 crore rupees has been transferred on the last day to the bank's current account at the request of the bank. So actually, the balance, if you will net it off, the short-term debt will be reduced by another 11.50 crore, you can say. Going forward, sir. Yeah. Okay. So, will it help in the profitability? This move, this increase in the short term and decrease in long term? See, basically, debt which we are getting, I will just tell you, our finance cost as a whole, if you see, Okay. as a part of the turnover, કેટલા percentage છે? Just a minute. Last year કેટલા ટકા હતું? 8 થઈ જાય. Copy માં. If you see, our finance cost as a part of turnover is around 5%. Yes, sir. Yes. In 24 and as well as in 25 also. But with the increase in turnover and due to IPO fund which we have received now, we will not be increasing much debt. So finance cost will go down in near future. So obviously profitability will improve to that extent. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. We'll take our next question from the line of Rohan Gupta, an individual investor. Please go ahead. Mr. Rohan Gupta, your line is unmuted. Please go ahead with your question. Hello. Yeah, am I audible? Yes, please go Yeah, ahead. audible. Sir, firstly, we wanted to understand the outlook, right? On the gold prices have shot up so much. So how is the demand looking at the moment? Is it slow? Is it picking up? Hello, Mr. Rohan. So honestly, Mr. Rohan, India is a very people in the customer base that we have is mainly the ladies. The moment they see a very high gold price in the newspapers and giving a shocking that the gold has shot too high, people tend to wait till the price comes to an average good price to buy. So if you see this whole jump of gold reaching 1 lakh from the journey of 82,000 rupees to 1 lakh has been so drastically fast. And also, then at the simultaneously, because of Trump taking some unfair decisions, people, there were reels showing that gold might crash down to 60,000. So the April and May sales have been really very slow because of the high gold price. But now that people know that gold is not going to come down less than 95,000 rupees, since the last 1 week, we are seeing good footfalls at the store because there are many weddings happening in August. Also the November-December weddings, because there are the new report says that gold might reach 1.25 lakhs in the next 3 months. So now things are getting better because this new price
is accepted by the clients that this is not going to crash less than 95,000 rupees for sure. Okay. And sir, what is the inventory levels that we are maintaining at the new store of ours? So the new store, which is called KK Jewels Gold and Silver, which is at a very nice upcoming area in Ahmedabad called Science City, is a 1,500 square feet store. The investment till now is around 35 crores in this store because we have almost have 33 kg of gold jewelry and gold jewelry, and we have around 300 to 400 kg of silver items. So the investment around 33 to 35 crores is done at the moment for this new store. Okay. In inventory. So sir, not in can, the okay. furniture, fixtures extra. Okay. So can we expect, say, this inventory to turn at least 2 times in this financial year? Like No, we can because it expect is a new, Mr. Rohan, because it's a new area, there are around 1 dozen jewelers around us, and we have come up with a very beautiful concept, and we don't want to sell what is available over there. So initially, in the first year, expecting 2 times of turnover isn't easy for us. We think at least we should try to make it once for sure. Okay. Okay. But sir, now coming to your historicals, right? I mean, if I look at the numbers that were reported in the RHP, it was 125 crore up to November revenue and a PAT of 8.8 crore. Okay. Hello. Okay. Yeah. So sir, that, I mean, compared to that, our last 4 months performance has dropped quite a lot, right? I mean, the revenue is still high, but still if I look at the margins per se, I think there's a big drop in the margins. Because in the RHP it was close to a 7% PAT margin, but in the last 4 months, I'll just get that number. Just give me a minute. Yeah, so I mean in the last 4 months our PAT margin has dropped to like 3.5%. So what exactly is the reason for this? I mean in general when we look at jewelry, right? So we see it's a much more 5-6% margin business only. So we were having an EBITDA margin of almost 12-13%. So are these 13% margins sustainable firstly, and second, why the drop in the last 4 months? Just a minute. We are working on it. We are replying it. No problem. Yeah, sure. Divide percentage of turnover. Percentage of turnover. Okay. અત્યારે year end માં EBITDA કેટલા percentage છે? year end માં EBITDA percentage કેટલો? See, basically, gold price increase, particularly in the post November, December, has affected margins to some extent. Okay. So, if we see as a whole EBITDA, if you see, in November it was around 16%, and in the March it is around 13%. So that 3% effect basically is mainly because of gold price and silver price increase only. Okay. But sir, thoda sa yahan pe, I mean, even if I look at H1, right, the reported H1 was 2.9 crore PAT, that is still September. So was October and November so good that because of PAT season, went to because of 8.8 season. crore? See, in always if you see first half sales and our second half sales, in first half sales is bit on a lower side, particularly in June, July, August, in rainy season and other things where the festivals are more, but marriages and other things are less. So if you see up to September turnover and after September turnover, there is always difference. And that's why in October, November, December, we get a sales also increase, and there our other NRI. and NRIs,
अब बोलो तमिल. So, Mr. Rohan, I would like to give you a good insight here that the month of November, December and Jan, as you know, there are many Gujarati people, NRIs, जिनको हम बोलते हैं जो बाहर रहते हैं, and during their winter vacation, mainly the Christmas vacation, they come down to India for their socials, for their marriages and everything else. So the sales in November, December, Jan, Feb is always higher for us because we have a lot of NRIs coming to the store and ending up making good purchases of this. Also, I would like to tell you, Mr. Rohan, that as you all know, the lab-grown diamond market, which started with a hit. So the margin lies in uncut diamonds and diamond jewelry as is better than compared to plain gold jewelry. तो जब से ये फेब से जब से ये लैब ग्रोन का मार्केट बहुत बड़ा है, उससे एक बार के लिए डायमंड ज्वेलरी की सेल्स घटी है, डायमंड के प्राइस भी घट गए. हमारा जो सेलिंग प्राइस आज से 6 महीने पहले 80,000 रुपए कैरेट था, वो घट के ऑलमोस्ट हमने कर दिया 65,000 रुपए कैरेट, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में भी लैब ग्रोन का चलन बढ़ता जा रहा है और एक बार के लिए ये मार्जिन हमारा घटा है जो आप बता रहे हैं मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई में. Okay, got it. और अभी आपको मैं एक अच्छी बात ये शेयर करूंगा आपसे मैं कि पिछले एक महीने से पता नहीं हमारा डायमंड मार्केट या तो डीटीसी ने बहुत अच्छा कैंपेन किया है. रियल इज नेचुरल. इफ यू हैव सीन देयर आर बिग टाइम्स ऑफ इंडिया एड पेपर्स. डी बियर्स हैज कम अप विद अ ब्यूटीफुल कैंपेन दैट अ लैब ग्रोन कॉस्ट यू जस्ट एज मच एज अ नॉर्मल डिनर. So don't devalue your love. So in last 15 days, Mr. Rohan, there has been no inquiry for lab grown. Again, people want to shift back to natural diamonds. And our diamond market, which is the BKC diamond market, has reported a price hike of 7 to 8% in the natural diamond because actually demand is going back to natural diamonds. So lab grown market is only for the Gen Z, but the original buyer of the jewelry, which is the parents who want to give jewelry and diamonds to their daughters and daughter-in-laws, they are again very much convinced and happy to go with natural diamonds. So this would really be very helpful to us for this financial year. Okay, got it, sir. Sir, and last question, like what is the guidance say for FY26 considering all the slowdown and everything, both on the revenue front and... Sir, so sorry. Can you repeat this question from start, please? Yeah, I was saying, what is the guidance for FY26 considering all these slowdowns that happened in 2 months, and can we sustain this EBITDA margin of say 12-13%? Mr. Rohan, we are surely hopeful to sustain. We are surely hopeful, and as I told you, the gold price is not expected to go down less than 95,000 rupees. And also lab-grown market again settling down and the diamond market again picking up. So we are definitely hopeful that we would be able to do this. Also, I will tell you, this year we are a little more aggressive compared to last year. Pre-IPO, we were not focusing on commercial marketing like newspaper ads, hoardings, radio. For the Science City store, if you would have seen our store launch on our Instagram, we've done so much of hard work. We have distributed pamphlets in the best societies. We have tied up with societies to organize a nice seminar about gold purity, why lab grown, why natural diamond. So we are doing much more higher activities this year post IPO because we genuinely feel we need to invest in marketing and pull new clients. Because if we think we will survive with our own existing clients, then we cannot increase our turnover. Science City store was the only reason that we understand how a normal jewelry store like TBZ, Kalyan or Jayalukas, who don't have a family presence in a particular city, but still they go to a city and open a store and do well. That's the only reason is the good marketing that they're doing. Okay, understood. So sir, and also I want to give you, I don't want this to be like, I'm just giving you a insight. After the Science City store, we have started getting a vibe that we should also target more smaller areas of Ahmedabad. We are looking for 2 more places, out of which we will freeze one very soon, which could give us with less investment, because we don't want to add gold jewelry over there. This is going to be an exclusive. Already we have 2 silver stores. So we want to come up with an exclusive silver boutique in a very nice area of Ahmedabad. The location hunt is going on. We have already shortlisted 2 places. We are talking to the owners. So that could be a store with an investment of 10 crore rupees, which could genuinely get us an additional sale of 15 to 20 crore rupees. Okay.
Okay, understood. This year, Okay. I'm telling you, Mr. Rohan, if you also see our Instagram page, I'm starting live videos from the next Friday, wherein I'm going to target the NRIs, because what is happening is all the NRIs who come during the wedding season, they end up buying big items from us. But on the day-to-day routine, they buy all the small items from their local jewelers based there. So I have seen that many of these jewelers of India from Bombay are doing live video sessions. So I have myself got a little training for this, and from next week, every week, I will be coming on the internet, hosting a 1-hour session where I'll be showing my new jewelry, the technical aspects of my jewelry, the price range. So I was very orthodox before the IPO, where I wanted to only look for word-of-mouth customers, but now that having the turnover pressure and the turnover commitment and genuinely the growth for my company and the investors, I have decided that I want to do everything possible where I can put a lot of efforts in marketing at a very fair cost. It's not like I'm getting some celebrity on board. I'm just thinking that if small efforts can make my company reach more customers, and if we can tap more customers, make more sales, so I will be able to additionally get 10-20 crore sales by these kind of platforms where the investment on the entire marketing is very less, sir. In short, Okay, we are sir. Got it. expanding our marketing efforts also. Yeah, okay. So got it. So, sir, what is our store target, say, for the next 2 years? Like, in this year, how many stores we aim to open additionally? And say in FY27, what is the target? Mr. Rohan, that data you will be receiving regularly on our announcements. Right now, we cannot But declare sir, some due to plans would be there. due to certain restrictions of declaring the things, the SEBI rules, etc. We cannot exactly give any details. In general, Okay, we are planning to open new stores. We have expanded our marketing efforts, and other things are going on. So, and one Okay. more thing which we are planning, that we'll announce next time after June. Okay. And sir, okay, you don't want to give numbers, but what is the management internal estimate, say, for growth over the next 3 years? No exact numbers, but like at what CAGR you think you can grow over the next 3 years? See, we are planning CAGR of at least around 20 to 25% minimum. Okay, 20 to 25%. But sir, this year should be on the higher side, right? FY26, considering our new showroom and these additional marketing activities that we are doing. Yeah, obviously. So, say organic growth can be 10% and another, say, 40 crores from there, right? That is what we feel. Even gold prices will also contribute in our CAGR. Okay, sir, got it. Thank you so much for answering everything. I'll get back to you. We'll take our next question from the line of Manikam Ravichandran, an individual investor. Please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. FY26, good afternoon. FY26, what could we expect, sir? Actually, there is always you can give some guidelines, okay? So, what could we expect? In prospectus, we have already... To be honest, sorry, sir, just please wait. Yeah, to be honest, we were expecting better numbers for FY25, after the IPO. So we understand there are some pressure and margins and all this. But at least with this IPO money and new store opening, you cannot say this 20% something like that, there is no meaning for, coming with IPO, and you cannot even grow the rate in which you have given pre-IPO, before IPO. So please tell us something for the investors so that people can see where we are looking in the future. Can you just repeat your question? Exact points in the question. What we are expecting in FY25, sir? What is the growth we are expecting FY25, in 26 we have already FY25? mentioned. See, we have to give conservative figure. I cannot give liberal figures. I cannot go on telling कि भाई हमारा 100% growth होने वाला है या मतलब whatever we have planned. According to that, we are seeing at least 20-25% CAGR in terms of revenue. Because new store is opened,
that from day one it will not be giving a full result. New stores also take 2 to 3 years into developing the attracting the customers, footfalls, etc. So this 25-26 we are expecting somewhere around, over last year we are expecting turnover growth of around 20 to 25%. Okay, sir. No questions. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and one on your phone now. Participants who wish to ask a question are requested to press star and one on their phone now. We have a question from the line of Vipin Kumar from VK Capital. Please go ahead. Hello. Yes, please go ahead. सर नमस्कार. नमस्कार. सर आपने पहले आपके शायद 5 शोरूम थे, ठीक है सर? एक शोरूम आपने और ओपनिंग करा है. नहीं सर, पहले हमारे 6 शोरूम थे और एक डिस्प्ले गैलरी थी. अभी एक शोरूम नया खोल दिया है जस्ट बिफोर फ्यू डेज. तो सर एक शोरूम जो नया खुला है इसका रेवेन्यू भी तो आएगा, तो आप ग्रोथ 25% कैसे बोल सकते हैं? जो पिछले आपके 6 शोरूम है उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी क्या? सर हमने कंजर्वेटिवली बोला है. हम अभी मैं ये बोलूंगा 300 करोड़ हो जाएगा, 400 करोड़ हो जाएगा, उसका मतलब नहीं. सर जो इन्वेस्टर होता है, जो आप अपनी 6 शोरूम या 6 दुकानें आप चला रहे हैं, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी आपकी नेक्स्ट 1 साल तक. विपिन जी मैं कैलाश बोल रहा हूँ. देखिए सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हर ग्रोथ के पीछे अपना प्रेजेंट काम आता है. जिस तरह से हमारे अप्रैल और मई महीनों की सेल्स है, जिस तरह से हमने अप्रैल और मई महीने में इतने ऊंचे सोने के भाव में हमने जो मंदी देखी है, अगर आप कहीं भी मतलब कोई भी अच्छे ज्वेलर जो आपके जान पहचान वाले हो उनसे भी कैजुअली पूछेंगे तो कहेंगे कि अप्रैल मई की सेल्स देख के हम डरे हुए हैं. अब देखिए अगर अपन आज बात करते हैं कोई भी नॉर्मल चीज की, तो अगर यही आप मेरे से बात कर रहे होते अप्रैल नवंबर दिसंबर में, तो मैं शायद आपको 50% ग्रोथ बोलने में डरता नहीं. पर अभी क्या हो गया कि ये अप्रैल और मई के अंदर ये 1 लाख रुपए के सोने के भाव. अच्छा, हमारा 2 नुकसान हो रहा है. सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि सोना अपनी ऊंचाई पे है, चांदी अपनी ऊंचाई पे है. वरना आज हमारा चांदी का भाव अगर 80-85 हजार रुपए होता तो हम कहीं ना कहीं चांदी के स्टोर्स पे अच्छी सेल करके एवरेज सेल्स को ठीक ले आते. हम तो दोनों जगह मरे में हैं. एक बाजू डायमंड का भाव टूटा हुआ है विपिन जी, एक बाजू सोने का भाव इतना तेज है, एक बाजू चांदी का भाव इतना तेज है, और साथ ही साथ ये जो 2 महीने हैं अप्रैल में, इतनी गर्मी होने से मेजोरिटी हमारे कस्टमर्स गुजरात के घूमने जाते अपनी फैमिलीज के साथ 1-1 महीना. आप मानेंगे नहीं विपिन जी, आई नो ये बात का कोई रिलेशनशिप होगा नहीं इस मीटिंग में, पर मैं खुद मैंने इस साल एक भी ट्रिप नहीं किया है. मेरी फैमिली घूमने गई है, मैं 10 दिन एक भी दिन घूमने गया विपिन जी, बिकॉज मैं खुद इतना अपसेट हूँ कि मैंने मेरे साइंस सिटी ओपनिंग के लिए दिलो जान से मेहनत करी 3 दिन तक, और ओपनिंग के दिन हमारे बारिश आ गई, इतनी गर्मी हो गई कि हमारा एक्सपेक्टेड क्राउड कम था. तो विपिन जी अभी क्या होता है, देखिए हर इंसान अपनी प्रेजेंट हालात को देख के कमिटमेंट करता है. मैं और हमारा अभी ये पहला आईपीओ है हमारी कंपनी, हम पहली बार हम इस तरह से आए हैं. तो विपिन जी थोड़ी सी हमें अभी एक हिचकिचाहट है कि हम कुछ ज्यादा कमिट ना कर दे. अभी देखिए आपको पता है हमारे आईपीओ के वक्त भी हमने जब ये बैलेंस शीट जो हमने डिस्क्लोज किया उसमें हमें कितने सारे थोड़े सेंसिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ सोच के बैठे थे, कंपनी कमाएगी, ये है वो है. तो उस बात से भी डर लगता है कि हमने तो कभी हमारा प्रॉफिट 14 करोड़ बताया ही नहीं था. उसके बावजूद कुछ इन्वेस्टर्स के फोन मेरे पास रात को 11 बजे आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं कि आपने हमको 14 करोड़ बताया था. तो विपिन जी होता क्या है कि एक दुकानदार होने के बावजूद, एक बिजनेसमैन होने के बावजूद मुझे हमेशा लगता है कि मैं वही बात करके दूं जो बात सही हो सके. तो हम थोड़े सेंसिटिव, हम अभी थोड़े कंजर्वेटिव हैं विपिन जी, क्योंकि हमारा अप्रैल और मई महीने का जो बिजनेस है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है. और नेक्स्ट जब मीटिंग होगी तब हम आपको, जब वी आर प्लानिंग सच टाइप ऑफ मीटिंग एवरी क्वार्टर, तो जब नेक्स्ट टाइम हमारी मीटिंग होगी तो हमारे पास 1 क्वार्टर का रिजल्ट होगा, तो वी विल बी एबल टू गिव यू मोर बेटर पिक्चर. ओके. तो सर ये बात तो 2 महीने की है नहीं ना, बात तो 12 महीने की चल रही है पूरे. सर एवरी क्वार्टर की देंगे ना. सर हमारा आईपीओ कब आया विपिन जी हमारा आईपीओ कब आया आप बताइए. हमारा आईपीओ जैन में आया है. हमने 9 महीने तो बिजनेस बिना आईपीओ के किया है सर, 10 महीने. अब 3 महीने में आप मेरे से कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर लेंगे विपिन जी? तो सर ये सर पिछले साल जो आपने 8 करोड़ का पैड करा था, उसके बाद आपने
11.5 का करा है, 30% तो आपने बिना आईपीओ फंड यूज करे हुए ग्रोथ दे दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात सोचिए ना, आईपीओ का पैसा यूज करके आप भी 25% ग्रोथ करेंगे। विपिन जी देखिए, विपिन जी सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जो लास्ट ईयर से इस ईयर की कंपैरिजन हो रही है, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल है गोल्ड के भाव का अनाप शनाप बढ़ना। उसमें मुझे तो फंड लगाना नहीं पड़ा। आज मेरा प्रेजेंट स्टॉक ही पड़ा अगर मेरा 50 करोड़ का माल 70 करोड़ में बिक रहा है विपिन जी, तो वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। अभी ये जो आईपीओ के बाद हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने विपिन जी हमारे नए शोरूम के लिए सामान खरीदा है 96,000 रुपीज के भाव में। मतलब जब हमने पेमेंट की है तब हमारा मन जानता है कि हमने क्या भाव में गोल्ड लिया है। ये सोना अगर घट के 80,000 हो गया तो क्या जवाब देंगे आपको, क्या जवाब देंगे वो हमारे परिवार को, समझो। और सेकंड थिंग, जो आईपीओ के जो फंड आए हुए हैं ना, उसमें आज भी 11.5 करोड़ रुपया तो हमने अनयूटिलाइज रखे हुए हैं, और जो 40 करोड़ में से 11.5 करोड़ अनयूटिलाइज किया और बाकी का 28 करोड़ रुपये का जो गोल्ड लिया है वो नए स्टोर में लिया हुआ है। मतलब अभी तक हमने आईपीओ का फंड का जो यूज एग्जिस्टिंग बिजनेस में, मतलब एग्जिस्टिंग 6 स्टोर में हमको आईपीओ के पैसे इतने यूज नहीं किए हैं जितने हमने नए स्टोर के लिए किए हुए। तो अभी उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम बात करेंगे, कहने का जस्ट एक्सक्यूज मी, जब हम जुलाई अगस्त में हम फिर से दूसरी कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, तब वी विल बी इन अ बेटर पिक्चर टू गिव यू द फिगर्स के क्या, क्योंकि तब तक हमारा नया स्टोर को भी 3-4 महीना हो गया होगा, तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू गिव यू द एग्जैक्ट एस्टिमेट. As of now, we are giving you conservative estimate. We cannot give you a liberal estimate. And that is also because of the poor performance of April and May. Also, sir, this is my request, humble request to all my investors. You have invested your hard-earned money in our company. But apart from the money, you can also invest in growing us. अगर आप हमारा सोशल मीडिया पेज आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में अगर हमें प्रमोट करते हैं, अगर आप लोग भी जो अपने सोने की या चांदी की खरीदी करते हैं उस पर हम पे विश्वास करते, तो सर 10-15 करोड़ का व्यापार तो आपके थ्रू भी बढ़ सकता है। तो मैं तो एक चाहता हूं कि अगर हम आपको एक अच्छा वीडियो बना के दे, या हम एक हमारी आईआर एजेंसी से बात करते हैं, आज आपके घरों में भी इतना सोना खरीदते हैं, आप इतना हीरा खरीदते हैं, तो कहीं आप भी हम पे विश्वास करें, थोड़ा आप हमारी कंपनी का हिस्सा है, आप भी हमें थोड़ा साथ दें, तो हमारा व्यापार बड़े ही बढ़ सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने सर आपके काबरा साहब, मैंने आपके सारे शोरूम्स देखे हैं, वो सारे प्राइम लोकेशन पे है, कोई तनिष्क के साथ में, कोई बिल्कुल सारे प्राइम लोकेशन पे है। तो मतलब बिजनेस तो नो डाउट आपको लगता है 25% से ग्रो करेंगे, बट मुझे लगता है वो 50% से ग्रो करेंगे जो आपके। विपिन जी इस साल मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हुआ, लंदन मेरी बेटी और बीवी अकेले घूम के आए हैं। अगर अगले साल मैं घूमने नहीं गया तो मेरा डाइवोर्स हो जाएगा विपिन जी। तो मैं तो इस साल इतना परफॉर्मेंस करने वाला हूँ कि आप मेरे को इन्वेस्टर स्पॉन्सर करेंगे कि हमारे डायरेक्टर को, फाउंडर को घूमने भेजो 10 दिन के लिए। जी बिल्कुल जी, मुझे वही तो बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप 50% से ग्रो करेंगे और आप बता रहे हैं कि 25%। मतलब कोई बात नहीं सर। विपिन जी एक बार मैंने अगली कॉन कॉल करेंगे अगस्त में ना, तो आप खुद बोलेंगे कि यार मजा आ गया। विपिन जी गलती से मैंने एक बार मेरी स्कूल में मेरी मदर को आके ये कह दिया मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और जब मार्क्स आए तो मेरी मम्मी ने चाटा मारा। तब से नक्की क्या मैंने कि पेपर अच्छा गया बोलने का ही नहीं, मैं ये बोलता मम्मी मैंने मेरी पूरी मेहनत अच्छी करी है, रिजल्ट भगवान के हाथ में। आप विपिन जी खाली इतना सपोर्ट करिए हमें, आपके फ्रेंड सर्कल में मैं आपको, हमने भी एक इंस्टाग्राम कम्युनिटी बनाई है जो इंडिया के बहुत कम ज्वेलर्स बना रहे हैं। हमने एक इतनी सुपर टेक्नोलॉजी बनाई है कि आपको सिर्फ रेफर करना है, कहीं आपको हमारी जवाबदारी लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग हमें अपने सर्कल में, अपने परिवार में रेफरेंस देते हैं तो उससे भी हमारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा। तो आपने पैसा लगाया है, थोड़ा सा आपका ये एफर्ट भी लगा दीजिए। सब इन्वेस्टर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी आपसे, आपने किसी सेलिब्रिटी को, मतलब क्या सेलिब्रिटी को भी वो करा है ना आपने ऑन? नहीं सर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ, अभी शाहरुख खान जी ने हमारा ब्रोच पहना, तो सर ये ऐसा है कि अभी आज की तारीख में पूरी दुनिया पीआर पे चलती है, तो सेलिब्रिटी को ऑन बोर्ड लाने का खर्चा 5 से 25 करोड़ रुपए, जो हमारी कंपनी को ना जरूरत है ना हमारी वो ताकत है। तो आजकल ये सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं
जो हमारे अच्छे सोशल कनेक्शन में रहते हैं, और वो थोड़े बहुत बार्टर सिस्टम, मतलब थोड़ा बहुत गिफ्टिंग के चक्कर में सेलिब्रिटी को हमारी ज्वेलरी पहनाते हैं, और वो फोटो हम कुछ समय तक यूज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। पर हम कहीं ये नहीं लिख सकते कि इन्होंने ये ज्वेलरी खरीदी है, हम सिर्फ लिख सकते हैं कि इन्होंने पहनी है। तो अभी शाहरुख खान ने जो ब्रोच पहना था, वो दोनों ब्रोच हमारे इंस्टाग्राम पे डालने के बाद मल्टीपल ऑर्डर, 3-3 पीस के ऑर्डर हमारे पास है इंडिया के 2-3 शहरों से। तो ये सब देखिए सर, विपिन जी आप भी समझते हैं, मार्केटिंग का पैसा जी दुखाने वाला पैसा है, एक बार खर्च होने के बाद वापस नहीं आता है। हम मारवाड़ी बनिया आदमी हैं, हमने मार्केटिंग में जितना हो सका है समझ के खर्च किया पैसा। ऐसा नहीं कि हमने पैसा खर्च ही नहीं किया है, इस साल ज्यादा कर रहे हैं खर्च हम, पर सोच समझ के कर रहे हैं। अगर हमारा काम गुजरात, अभी हमें गुजराती सेलिब्रिटी को हमारी ऑन बुक लाने का सोच रहे हैं, वो 5 लाख रुपए खर्चे में मान जाएगी। अब हमें 5 लाख में अगर जो काम आ रहा है तो उसके लिए हमको बॉम्बे जाके 50 लाख नहीं खर्चने, क्योंकि हमारे शोरूम गुजरात में ही है, हमें आगे जाके भी गुजरात में ही शोरूम खोलने हैं। तो हम चाहते हैं हम गुजराती फेस को यूज करें। तो इस तरह से विपिन जी छोटे छोटे दिमाग लगा के मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर अप्रैल मई में विपिन जी बहुत टूट गए हैं, बहुत सेल पुअर है, कस्टमर सोना खरीदने से डरता है समझो। अरे सर, अप्रैल मई में गर्मी भी है, सोने का भाव भी है, वो मैटर नहीं करता। मैटर दिवाली के टाइम जब आपकी सेल 4 गुना हो जाती है, मैटर तब करता है। और काबरा जी, ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि शाहरुख खान आपकी ज्वेलरी अपने दिल के ऊपर लगा के बैठा हुआ है, मतलब अपने गोट पे जो भी है, छोटी बात थोड़ी है। शाहरुख खान ने आपकी ज्वेलरी, बिल्कुल सर, बिल्कुल प्राउड है ना, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही बड़ी चीज है कि मतलब के ज्वेलर की ज्वेलरी शाहरुख खान पहन विपिन जी लास्ट 40 मिनट में कुछ सेकंड बाकी है, हमारे पास एक और मॉडल है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा, यदि आपको कभी लगता है, हाँ जी, एक चीज और है कि आपने जो अपनी ये शोरूम, आपका नया शोरूम खुला है, वो बीएससी पे कभी अनाउंसमेंट करा है आपने कि हमारा शोरूम खुला? कर दिया एनएससी पे अनाउंसमेंट है सर। किस डेट पे करा सर? ये डेट देखनी थी मुझे, डेट क्या थी, आइडिया है? भैया मॉडरेटर, कैन यू जस्ट, 21 मई को लॉन्च किया था, 21 मई को 21 मई के आसपास में किया है, ये क्या 2 दिन आगे पीछे में हमने अनाउंसमेंट कर रखा है ना। तो मैं एक्चुअली अनाउंसमेंट ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी अनाउंसमेंट, इसलिए बोल रहा था। नहीं, एक मिनट चालू एक मिनट આપણે આપણે શોરૂમ નું એનાઉન્સમેન્ટ કઈ તારીખે કર્યું હતું? એક સેકન્ડ ચાલુ રખ્યા આપ। जल्दी कह दें बेटा। विदिन 48 आवर्स ही किया है एग्जैक्टली। मैं डेट देता हूँ आपको, एग्जैक्ट डेट देता हूँ। नहीं, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं था। नहीं, मैं आपको 21 मई को हमने खोला है, तो या तो 22-23 को हुआ होगा या 19। अरे सर, अनाउंसमेंट करी नहीं आपने। 23 मई में देखिए सर, 23 मई के अनाउंसमेंट। 23 मई में देखो, 23 मई, 24 मैक्सिमम 24 में, बिफोर 24 मई तो हो ही गया है। 24 मई की अनाउंसमेंट में, एक सेकंड सर, एग्जैक्ट डेट क्या ना बेटा। आप लोग शेयर में वैल्यू डाउन से ईपी में तुम लोग कुछ कंपैरिजन तो करो, वेतन कंपनी के नाम मुझे तो खबर नहीं। विपिन जी, हम चेक करके आपको इस बारे में तुरंत बता रहे हैं वापस। सर एक चीज काबरा जी, पहली बात तो सर ये कि अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो बीएससी एनएससी पे आप टाइम वाइज डालते रहिए कि ये हमारी अनाउंसमेंट है। ये हम इंस्टाग्राम से हमें पता लगता है कि आपका शोरूम खुल गया है, और बीएससी पे देखते हैं कि शोरूम ही नहीं खुला। मेरी बात में पहली बात ये। और दूसरी बात काबरा जी, मैं बहुत कंपनियों से मिला हूँ, आपकी गुजरात की कंपनियां, कुछ पावर कंपनीज हैं, कुछ भी हैं, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस जो दी है ना वो 20-25-30% की दी है, बट उनकी जो ग्रोथ हुई है ना वो 50% 100% हुई है। तो गाइडेंस हमेशा कंजर्वेटिव होती है, ग्रोथ जो है वो जेन्युइन होती है। ग्रोथ आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल सर, जान लगा देंगे बोलने को आप। Thank you. We'll move on to our next question from the line of Venkata from X.com. Please go ahead. Yeah, hi. Hi, Kailash. नमस्ते। Yeah, I have one question here. Okay, do you have any plans to enter into B2B segment as well?
And Yes, sir. one more thing, right? You have been. I was waiting for this question from all of you, sir. And Mr. Shah, who is my auditor, also my business guru, he has given me a very good insight. And tomorrow I am meeting someone whom I am not able to tell you on this phone, but I am meeting someone who has 350 showrooms in India and who is coming up with another 100 showrooms in the next 1 year. I have a one-to-one meeting with the CEO tomorrow, sir. I cannot disclose the name here, but if I get a chance tomorrow, I will definitely share with you. We definitely want to enter the B2B model because, sir, it is a very great model to increase our turnover and also turn our old stock. So we are trying our best to get use of this. Not only B2B Yeah. market, we are also trying to enter into export market. And recently we have taken a part into exhibition at Saudi also, Saudi Arabia. So we have since last 1 year we are already planning to enter into B2B. We are also planning into entering into export. We are also planning to open stores out of Ahmedabad also. We are not limiting ourselves to pan India. We are forcing over a period of time beyond pan India stores of KK Jewels. But at this juncture ये ऐसा कुछ बोलना वो कुछ थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं. Okay, that's great to hear, sir. I just want to give a one glance, what I call how this B2B, can scale up your revenues, right? Okay. You must be knowing, Sky Gold, okay? That has, clients, all the top-notch clients, on the retail showrooms, okay? Yes, sir. So Yes, they sir. have grown. They have, in 22, financial year 22, they have done, sales of 786 crores, okay? And then in last year, that is, financial year 24-25, they have 3,500. It is almost like, 5 times, okay? So with the 5 times growth in the sales and then, the PAT, whatever in financial year 2022, they have done 17 CR. In the last financial year, they have done 133 PAT. Okay, I'm really interested in Yeah, we are already watching our peer companies. We are also closely observing all the companies in the listed companies, listed peers as well as non-listed peers. And so we are already observing all these things, and we are also planning accordingly that how this company can grow to a very big level. Okay. Nice to hear. Yeah. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, that was the last. Moderator, I question have for one today. small thing to add here, if you don't mind. Yes, sir, please go ahead. So, to all our investors, I appreciate that you have been patient. I appreciate you had better expectations and we couldn't prove it this year. But I want to humbly request you that small ideas convert into big businesses. So, you have invested money in us. But if there is any idea, like how the last question sir has given us for B2B, अगर आप लोगों के पास कोई भी आइडिया है जो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं तो मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, मैं आपको और डिटेल दे सकता हूं. तो प्लीज आप हमें पैसों के साथ साथ आपने पैसे दिए, हमें आपने विश्वास दिया हमें, पर अगर आपको लगता है कि कोई छोटा आइडिया यदि आपके शहर में हम एक छोटा एग्जीबिशन कर सके आपके ग्रुप सर्कल के साथ, बिकॉज ये कंपनी आपकी कंपनी भी है, तो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी. मैं छोटा हूं उम्र में पर मैं भाग सकता हूं, दौड़ सकता हूं. तो यदि आपको लगता है कि हम कहीं भी कमजोर हैं, आप अगर कहें अच्छा अब B2B के लिए भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं. जैसे आपके शहर में कोई अच्छा प्रोमिनेंट ज्वेलर आपका दोस्त है तो आप मेरी उनसे बात करवाइए, मैं उनको मिलने आऊंगा, हमारा सामान दिखाऊंगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और अपनी कंपनी बहुत कम खर्चे में आगे बढ़ सकती है. ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी से. पैसा दिया आपने, विश्वास दिया आपने, बस थोड़ा हमको आप राइट गाइडेंस और मार्गदर्शन दीजिए. बस जो कटार में हमारे रविचंद्र जी उनसे मैं खास कहूंगा, हम जब सऊदी आ रहे हैं, यदि आपको लगता है आपके वहां पे कोई ज्वेलर फ्रेंड्स हैं तो प्लीज मुझे मिलवाइए. या तो कभी क्या होगा, मैं उनको कुछ बेच लूंगा या उनसे कुछ सस्ता खरीद लूंगा. तो इस तरह से मिलकर अपन सब इस कंपनी को बड़ी बना सकते हैं. सर बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. Thank you, sir. On behalf of 28 Consulting, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.